Hey, what is up internet? Welcome back to our channel. So I recently got my dad the Redmi Note 10 Pro, but आप में से बहुत लोगों को actually ये नहीं पता कि I ordered the Poco X3 Pro first, but I changed my mind. मैंने वो cancel कर दिया order and I got the Redmi Note 10 Pro. But why? Well, मेरे हिसाब से जो Redmi Note 10 Pro है वो एक better overall device है. Yes, Poco X3 में आपको raw performance बहुत ज़्यादा अच्छी मिलती है. But Redmi Note 10 Pro is actually a much better deal when you're buying a phone under rupees 20,000 here in India. Let's talk more about it. Let's start to talk about the design because that's one of the factors मैंने Redmi Note 10 Pro choose किया over the Poco X3 Pro. Now इससे पहले मैं Galaxy S21 यूज़ कर रहा था, so उसके बाद Redmi Note 10 Pro बहुत बड़ा फील होता है हाथ में. Again guys, it's not a big phone, it's a huge phone, but despite that I did get used to it mainly because ये इतना thick नहीं है, so it's only 8.1 millimeters thick, which is much less than the Poco X3 Pro. And also जो back side है इसका वो curve होता है, which makes it much more comfortable to use in the hands. Now जो उसका side frame है वो प्लास्टिक से बना हुआ है, but जो उसका back side है वो पूरा ग्लास से बना हुआ है with Gorilla Glass 5 protection. And I know glass is more fragile and it tends to break more easily than plastic, but I would say on the Redmi Note 10 Pro it's actually worth it, even though it does bring in a little extra heft because ये फ़ोन 215 ग्राम्स का है. और अगर आप कोई केस यूज़ करने का सोच रहे हो, जो बॉक्स में केस आता है, I would say that's an ideal option because वो ज़्यादा मोटा नहीं है तो ज़्यादा भारी नहीं है, but at the same time वो आपके फ़ोन को साइड से और एजेस से तो प्रोटेक्ट करके रखता ही है. Now I have the dark night variant here which comes with this glossy and that gradient finish that changes with the angle of light, but अगर आपको मैट फिनिश देखना है वो सिर्फ ग्लेशियर ब्लू और ब्रॉन्ज कलर ऑप्शंस में ही अवेलेबल है. इट्स काइंड ऑफ सैड बिकॉज ब्लैक में भी मैट फिनिश काफ़ी अच्छा लगता, but that's that. Now the buttons on the Redmi Note 10 Pro are fairly tactile as well, and I thoroughly enjoyed using that physical fingerprint scanner which is embedded on the power button on the side. It's again very fast, it's accurate, and it just works. Now the only thing I would want to change in terms of the design on the Redmi Note 10 Pro is the camera bump. I know it still looks much better than the competition, but जो camera bump है वो still बहुत ज़्यादा बड़ा है. I mean like we have 2 levels now, so it's kind of insane. But apart from that, in terms of the design, the Redmi Note 10 Pro is solid and feels much more premium for the price. Now rounding off this design is a really nice 6.67 inch Full HD Plus AMOLED display with 120Hz refresh rate. And guys, I have to say this, the display is my favorite part of the Redmi Note 10 Pro, and this is where Xiaomi has just kicked out the competition at this price point. Now first of all, हमें एक punch hole display देखने को मिलता है, which is really nice, and on top of that it's an AMOLED display. So जो colors है वो काफ़ी ज़्यादा saturated है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और जो blacks है वो काफ़ी deep है. And उसके ऊपर से it's 120Hz refresh rate, and this is not those variable refresh rate which is found on some flagships. This is actually fixed 120Hz refresh rate, which is just amazing. Now Xiaomi also claims that the Redmi Note 10 Pro's display can go as high as 1200 nits peak brightness. Now, I'm not sure what's the truth here, but what I can tell you is that even if you use the Redmi Note 10 Pro under direct sunlight, you will not have any complaints. And surprisingly, हमें इसमें dual speakers भी देखने को मिलते हैं. Now again, it's not the best. जो बेस है वो थोड़ा कम है, but at the same time I'm glad that we got dual speakers on the Redmi Note 10 Pro. Now the only thing that I didn't like about this display is that chrome ring around the punch hole. Now again, it's not that big of a deal, but I can see some people getting annoyed by that. And now that we are on the selfie camera, let's talk about the cameras on the Redmi Note 10 Pro. Now इसमें हमको एक quad camera setup देखने को मिलता है. So at the back side you get a 64 megapixels primary camera. उसके साथ you get an 8 megapixels wide angle camera, and you also get a 5 megapixels macro sensor along with a 2 megapixels depth sensor, which I'm not going to talk about of course. और front में you get a 16 megapixels selfie camera. Now in broad daylight or in good lighting conditions, जो प्राइमरी 64 मेगापिक्सल्स कैमरा है वो काफ़ी अच्छी फोटोज निकाल सकता है on the Redmi Note 10 Pro, especially when it comes to details. Now it does tend to oversaturate the yellows and greens sometimes, but I guess most people won't mind that. Now जो dynamic range देखने को मिलता है हमें वो काफ़ी सही है, and I like the fact जो इसका automatic HDR है वो ज़्यादा aggressive नहीं है. Now one thing to note here is that even though ये 64 मेगापिक्सल्स का कैमरा है, जो आप फोटोज क्लिक करोगे Redmi Note 10 Pro के प्राइमरी सेंसर से वो 12 मेगापिक्सल्स ही आएगी, because the Redmi
Note 10 Pro uses that pixel binding technology, although you do still get an option to click 64 megapixels photos as well. Now if we move to indoors or under low lighting conditions, मैं काफ़ी impressed था again, although photos थोड़ी soft हो जाएंगी, but at the same time I found the primary cameras to be still much better than the competition overall. Now moving on, I would say the 8 megapixels wide angle camera does a much better job at color reproduction, but at the same time you also lose a lot on details. जो डायनामिक रेंज है वो भी काफ़ी एवरेज है, एंड ओवरऑल जो वाइड एंगल कैमरा है आई वुड से इट्स काइंड ऑफ ओके एट बेस्ट. ऑन द अदर हैंड मैं मैक्रो लेंस से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ था, बिकॉज इफ़ यू गेट इट राइट यू कैन एक्चुअली गेट सम रियली नाइस मैक्रो पिक्चर्स. So for once, macro cameras on phones are not crappy. And in terms of selfies, I usually like the photos taken from the 16 megapixels front camera. जो colors थे वो फिर again kind of accurate थे, I would say. I also like the portrait selfies more than the portraits I took from the primary camera, which was something strange in my opinion. But one thing to note here is that जब आप सेल्फी कैमरा के साथ नाइट मोड यूज़ करोगे, it will just blow up your face with artificial light completely. So I would again recommend not using it at all. Now for the videos, the Redmi Note 10 Pro is actually missing 4K at 60 FPS, and I know this could be a big deal for a lot of you out there. For me it was not, because मैं mostly 1080p में ही वीडियो शूट कर रहा था at 60 FPS, and videos were again kind of okay at best, I would say, because there is no dedicated optical image stabilization, so videos tend to be a little shaky. And जो front camera है उससे you can only shoot in 1080p at 30 fps max. Now एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी जब मैं Redmi Note 10 Pro से पिक्चर्स ले रहा था is that there is quite a bit of shutter lag, and it's a solid 1 to 2 second shutter lag. Now मुझे लगता है ये सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम है, बिकॉज जब मैंने Gcam इंस्टॉल किया that immediately solved the issue. Now apart from the cameras, inside we get the Snapdragon 732G, which I still think is a really good processor in 2021. Now I know Poco X3 Pro में आपको Snapdragon 860 मिलता है, which is I think any day better than the Snapdragon 732G. but अगर आप डे टू डे में देखो आपको इतना फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा. Now मेरे पास यहाँ पर 6+64GB वेरिएंट है, but Redmi Note 10 Pro 6+128 और 8+128 वेरिएंट्स में भी आता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट ऑल्सो कम्स विद अ डेडिकेटेड माइक्रो SD स्लॉट, विच आई थिंक इज अ बिग प्लस. नाउ मैंने इस फोन पे कुछ गेम्स भी खेली, इंक्लूडिंग कॉल ऑफ ड्यूटी एंड ऑल्सो द रिसेंटली लॉन्च्ड बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया. एंड ऑल्दो Redmi Note 10 Pro HDR10 सपोर्ट करता है, आप बैटलग्राउंड्स मोबाइल इंडिया सिर्फ HD सेटिंग्स में खेल सकते हो एट हाई फ्रेम रेट. बट अगर आप उस सेटिंग्स में खेलते हो, आई डिड नॉट फेस एनी इशूज एट ऑल. एंड ऑल्दो फोन थोड़ा वार्म जरूर होता है, but it's nowhere near unusable. But then there is MIUI. एंड आप बोल सकते हो कि MIUI में बहुत सारे फीचर्स हैं और आप बहुत कुछ कस्टमाइज़ कर सकते हो. और MIUI 12.5 के बाद एक्चुअली में बहुत सारे बग्स जो थे वो भी फिक्स हो गए थे और परफॉर्मेंस काफ़ी सही हो गई थी Redmi Note 10 Pro पे. बट सिंपल थिंग्स लाइक आपको कॉपी टू क्लिपबोर्ड का ऑप्शन नहीं मिलता, या अगर आपको रिंगटोन चूज़ करनी है तो MIUI की थीम्स ऐप खुलती है पहले, उसमें आप रिंगटोन सर्च करो और उसके बाद भी आपको कुछ खास रिंगटोन नहीं मिलती है. ये जो चीज़ें हैं still makes me feel कि MIUI को still improvement की ज़रूरत है. Now let's talk about other things. Redmi Note 10 Pro में आपको 5020 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, and I would say it's decent. It's not best, but I was able to get about 5.5 hours of screen on time with 120Hz refresh rate. And if that's not enough, you also get a 33 watt fast charger inside the box. And एक चीज़ और जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी Redmi Note 10 Pro में, वो थी इसकी वाइब्रेशन मोटर. नाउ यूजुअली अगर आप 20,000 के नीचे कोई फ़ोन लेते हो उसकी वाइब्रेशन मोटर इतनी अच्छी नहीं होती, बट Redmi Note 10 Pro में एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. नाउ कॉल क्वालिटी या कनेक्टिविटी में मुझे कुछ ज़्यादा इशूज़ नहीं फील हुए एक्सेप्ट द प्रॉक्सिमिटी सेंसर, बट आई एम नॉट श्योर इफ इट्स रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर. Now Redmi Note 10 Pro also supports carrier aggregation and also DRM L1, so आप Netflix या Amazon Prime videos पे HD में videos देख सकते हो. And lastly, you also get IP53 watt resistance, which I think is super rare under rupees 20,000. And this brings us to the final segment of this video. This is exactly what I'm trying to prove. Redmi Note 10 Pro ओवरऑल एक मच बेटर डिवाइस है, बिकॉज आपको हार्डली कोई कॉम्प्रोमाइजेस देखने को मिलते हैं. येस, Poco X3 Pro में आपको बेटर प्रोसेसर देखने को मिलता है, बट यू डू लूज आउट ऑन अदर थिंग्स देन. सो अगर आपको एक ऑलराउंडर फ़ोन लेना है, Redmi Note 10 Pro इज़ एक्चुअली वन ऑफ द बेस्ट डील्स अंडर रुपीज़ 20,000. ऑन द अदर हैंड, अगर आपको सिर्फ
अच्छा परफॉर्मिंग फ़ोन देखना है और इफ़ यू वुड वांट टू यूज़ योर फ़ोन फॉर 3 or 4 years, I would say Poco X3 Pro is a better deal. So yes guys, this was my Redmi Note 10 Pro review. If you have any questions around Redmi Note 10 Pro, drop them in the comment section below. And if you like this video, make sure you smash that like button and share it with your friends who are actually planning to buy the Redmi Note 10 Pro for themselves. And before you leave this video, make sure you subscribe to TQnet and especially hit that bell icon so that you get notified whenever I upload such reviews in future as well. So till then, keep asking and I will see you in the next one.